Okay, today in cost management course we will discuss all processes of cost management, which includes plan cost management, estimate cost, determine budget and control cost. And we will discuss in detail the major tool and technique of control cost, that is earned value management. So plan cost management includes the processes involved in planning, estimating, budgeting, financing, funding, managing and controlling cost so that the budget can be completed within the approved budget. As we have talked about in detail that we have 4 processes in project cost management. First process is called plan cost management. Plan cost management process is part of project management plan. We have talked about in detail that when in the beginning phases of the project, in project management plan, we specify tools and techniques and processes of all 10 knowledge areas. Fine. So in estimating cost, the process of developing an approximation of the monetary resources needed to complete the project activities. In estimate cost, what we do, we take a scope baseline, we take a schedule baseline. In scope baseline, where we graphically try to explain our project in work breakdown structure and in work breakdown structure dictionary, and scope base when we take the scope baseline, that includes activity list, activity attributes. So we specify और उसके आगे हम फिर specify करते हैं कि कौन सी activity कितने budget में complete होगी. Fine. So estimate cost process is about to take your scope baseline, your schedule baseline, और उसके बाद उसको जो आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं उसके आगे कॉलम हम ऐड कर लेते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है, कौन सी एक्टिविटी जो है कितने में कंप्लीट होगी. इन डिटरमिन बजट व्हाट वी डू, वी ट्राई टू एग्रीगेट आवर एक्टिविटीज़ अप टू वर्क पैकेजेस एंड कंट्रोल अकाउंट्स, जिसमें हम अपने वर्क पैकेजेस को फिर उसको एग्रीगेट कर देते हैं. फॉर इंस्टेंस एक वर्क पैकेज है, वर्क पैकेज 1. अंडर वर्क पैकेज 1 यू हैव 10 एक्टिविटीज़. 10 activities, for example, will take around will charge you $1 million. So उन तमाम को हम जमा करते हैं, उसमें रिस्क रिजर्व्स वगैरह सारे ऐड करके उसको हम ऊपर ले आते हैं कंट्रोल लेवल तक, कंट्रोल अकाउंट लेवल तक. तो एग्रीगेशन का नाम होता है डिटरमिन बजट का. एंड इन कंट्रोल कॉस्ट विच इज़ पार्ट ऑफ मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस ग्रुप, उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें फिर हम लोग जब when your project falls in executing phase, so somehow monitoring and controlling department will be managing it. So as a project manager, your responsibility is to keep your project on track. It should be completed within budget, it should be completed within cost. Fine. So these are all the 4 processes which you will study today. Plan cost management is the process that establishes policies, procedures and documentation for planning, managing, expending and controlling project cost. The key benefit of this process is that it provides guidance and directions on how the project cost will be managed throughout the project. As far as inputs to plan cost management is concerned, you need scope baseline. In scope baseline, we have 3 documents. Number 1 is called project scope statement. Second one is called work breakdown structure. And third document is work breakdown structure dictionary. Scope statement is a summary document of your requirement documentation. ठीक हो गया. और उसके बाद यू टेक वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर विच इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर प्रोजेक्ट. और उसके बाद ईच एंड एवरी पैकेज ऑफ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर इज explained in work breakdown structure dictionary documents. So altogether these 3 documents, when it get formal approval from the project sponsor, it becomes scope baseline. Clear? Similarly, when you complete your scope baseline, next process in project management is to work on your activities level in schedule phase. जब हम इसको टाइम मैनेजमेंट में लेके जाते हैं तो वी टेक आवर स्कोप बेसलाइन and we further decompose our work packages
of work breakdown structure into more manageable, more smaller components. Those are called activities. In activities we take our work package और उसको हम छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देते हैं. उसके बाद उन वर्क पैकेज एक्टिविटीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं. फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एक्टिविटी, व्हाट विल बी द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्टिविटी, हु विल परफॉर्म इट, वेयर इट विल बी परफॉर्म्ड, ठीक है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक, व्हाट विल बी द प्रीडिसेसर, सक्सेसर, वो हम उसको एक्टिविटी एट्रीब्यूट्स में सारा एक्सप्लेन करते हैं. फाइन. सो यू नीड स्कोप बेसलाइन, you need schedule baseline. When your network diagram, activity list, activity attributes, when you complete your schedule work and you get formal approval from the project sponsor, that becomes your scope schedule baseline. And third one is other information, any related to scheduling, risk, procurement, communication, सारी चीज़ें जो documents होंगे are needed. So first input is project charter. What is project charter? Project charter is the first official document in project management which contains the objective of the project, description of the project, and obviously here as far as plan cost management is concerned, at this stage what you need? Budget. What is the total budget of this project? So therefore we need here project charter. Next is enterprise environmental factors and organizational process assets. These are the two common inputs to all processes in project management. आपके पास we have 47 processes. हर process का input definitely enterprise environmental factor and organizational process assets होते हैं. Organizational process assets में templates, methods, policies, methodologies, ये सारी आपको मिलेंगी पीएमओ ऑफिस से. इंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर क्या होते हैं? आपके ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर किया है, द वे दे वर्क बिहेव, उसमें सारा इसको लेके चला जाता है. नो एक्सपर्ट जजमेंट मीटिंग्स आर ऑलमोस्ट कॉमन टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑल प्रोसेसेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. 47 प्रोसेसेस में सब में नहीं आता, लेकिन मेजॉरिटी प्रोसेस में आप देखेंगे एक्सपर्ट जजमेंट एंड मीटिंग्स ये आपकी इंक्लूडेड होंगी. सो एक्सपर्ट जजमेंट गाइडेड बाय हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंसाइट अबाउट द एनवायरनमेंट एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रायर सिमिलर प्रोजेक्ट्स. एक्सपर्ट जजमेंट कैन आल्सो सजेस्ट वेदर टू कंबाइन मेथड्स and how to reconcile differences between them. Judgment based upon expertise in an application area, knowledge area, discipline, industry as appropriate for the activity being performed should be used in developing the cost management plan. Next is analytical technique. Analytical technique developing the cost management plan may involve choosing strategic options to fund the project such as self-funding, funding with equity or funding with debt. The cost management plan may also details way to finance project resources such as making, purchasing, renting or leasing. आप यहाँ पे डिसाइड करते हो कि करना क्या है. आपने आप प्रोक्योर करोगे, कोई आपको सब कंपोनेंट्स चाहिए प्रोजेक्ट का, या आप खुद बनाओगे उसको, या आप रेंट पे लोगे. आपको इक्विपमेंट्स चाहिए होती हैं, आप सब कुछ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में आपको नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स रिसोर्सेज चाहिए होते हैं जो हम प्रोक्योर कर लेते हैं या रेंट पे ले लेते हैं, और जब वो काम ख़त्म हो जाता है तो हम उसको वापस कर देते हैं. अब इक्विपमेंट्स आपको चाहिए, मशीन्स आपको चाहिए, टूल्स आपको चाहिए, वो जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा फिर उसका क्या करोगे? तो बेहतर ये है कि आप उसको रेंट पे ले लो या प्रोक्योर कर लो या कोई कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी के हवाले कर दो, या आप किसी थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले कि वो आपके लिए वो आके एरिया परफॉर्म कर ले, फेस एक्टिविटी परफॉर्म करे. सो these decisions like other financial decisions affecting the project may affect project schedule or risk. Organizational policies and procedures may influence which financial technique are employed in these decisions. Techniques may include but are not limited to payback period. आप पढ़ चुके हो उसको. जब आप किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो पैसा आपका कभी डूबता नहीं है. यू कैलकुलेट इन पे बैक और नेट प्रेजेंट वैल्यू IRR कि आपके जो आज इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो आपको कितने नंबर ऑफ ईयर में इस प्रोजेक्ट से वो इन्वेस्टमेंट आपको वापस मिल जाएगी, और उसके बाद आपका प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा. तो इसमें पे बैक होता है जिसमें नंबर ऑफ़ ईयर्स का ताल्लुक होता है. नेट प्रेजेंट वैल्यू होता है जिसको NPV कहते हैं, इसमें नंबर ऑफ़ ईयर्स
हमारे आते हैं, लेकिन हर साल का अपना रेट आ रहा होता है फ्रैक्शन का, फिर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट को उसके साथ, और जो रिटर्न आ रहा होता है वो इस फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई होता है। और IRR, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये सारे इसके आते हैं। उसके बाद मीटिंग्स हैं। मीटिंग्स में होल्ड प्लानिंग मीटिंग्स टू डेवलप कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान। Attendance at these meetings may include the project manager, project sponsor, selected project team members, selected stakeholder, anyone with the responsibility of project cost and others as it. ठीक है, तो these are the tools and techniques, and the only output of this process is called cost management plan. So the cost management plan is a component of project management plan and describes how the project cost will be planned, structured and controlled. The cost management processes and their associated tools and techniques are documented in the cost management plan. This includes the level of accuracy for cost estimates, unit of measures, किस में कैलकुलेट करोगे, ठीक है, control threshold, rules for performance, cost reporting, processes for estimating cost, processes for developing time phase budget, processes for monitoring and controlling cost. You have dozens of tools and techniques in control cost, determine budget, estimate cost and plan cost. Not all of them you are going to use. You will specify what tools and techniques you will adopt to work on this phase of the project. ठीक है, आपके पास बहुत सी टूल्स एंड टेक्निक्स होती हैं। फॉर एग्जांपल एनालॉगस टूल एंड टेक्निक है, फॉर एग्जांपल पैरामेट्रिक है, फॉर एग्जांपल बॉटम अप एस्टिमेटिंग है, फॉर एग्जांपल 3 पॉइंट एस्टिमेटिंग है, फॉर एग्जांपल देयर आर सो मेनी अदर टूल्स एंड टेक्निक्स। सारी की सारी तो हम यूज़ नहीं करते। हमारा रिपोर्टिंग मेथड क्या होगा, हम किस तरह कम्युनिकेट करेंगे प्रोजेक्ट स्पॉन्सर को, किस फॉर्मेट में हम रिपोर्ट्स भेजेंगे। यू विल हैव टू स्पेसिफाई हेयर कि this will be my policy, this will be my strategy, this is how I will communicate with the project sponsor, my stakeholders and within the team किस तरह से हम इसको कम्युनिकेट करेंगे। ये सारे का सारा जो डेटा कंपाइल आप करते हो किस प्रोसेस में करते हो, प्लान कॉस्ट मैनेजमेंट में करते हो, ठीक है। इस प्रोसेस का मकसद क्या होता है, पॉलिसी बनाओ। You are going to start your work on very sensitive knowledge area, that is estimating or budgeting or finance. So जब फाइनेंस का ताल्लुक आता है तो आप अपनी पॉलिसीज़ बड़ी डिटेल्ड एंड बड़ी सेंसिटिवली आप उसको स्पेसिफाई कर जाते हो ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। So this is all about plan cost management. I hope that as far as plan cost management is concerned, it's clear now. This process is part of project management plan. ठीक है, plan cost management and cost management plan. Cost management plan is the name of the document, ठीक है, जो कि produce होता है when you finalize your work on plan cost management. You have 10 knowledge areas. Integration के बाद scope, schedule, budget, control cost, फिर क्वालिटी, देन फिर कौन सा आता है, कम्युनिकेशन, फिर कौन सा आता है, रिसोर्सेज, रिस्क, प्रोक्योरमेंट, स्टेक होल्डर। इन तमाम के मैनेजमेंट प्लान आप बनाओगे, ठीक है, वो फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान का हिस्सा बन जाते हैं।